नहीं, वो जेंगाबुरु ना हिंदी बेल्ट के लोग बोल रहे हैं कि वो तेलुगु वर्ड है। अच्छा। तेलुगु बोल रहे हैं कि मलयालम वर्ड है। ओके। ठीक है। अब ऐसा एक माहौल ये हो गया कि और कौन सी लैंग्वेज में जेंगाबुरु है किसी को पता नहीं है। अरे बाप बट रे। आज ट्रेलर लॉन्च होगा, पता चल जाएगा। ओके ओके ओके। नहीं, सब जगह सर्च करने वाले हैं। द मोस्ट पॉपुलर थिंग ऑन इंटरनेट विल बी कि जेंगाबुरु है क्या और कहाँ है, ये सब सर्च करना। व्हाट अबाउट यू सर? का तो इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो जेंगाबुरु जब नरेशन दे रहे थे सर तभी बताया कि जेंगाबुरु का मतलब होता है लाल पहाड़। अच्छा। तो अब वो काफ़ी था समझने के लिए। ओके। बट सुनने में कितना सही सुंदर सा नाम है जेंगाबुरु। सुनने में बड़ा सही लगा। OTT and Chill करण के साथ रेडियो सिटी 91.1 पर। मेरा नाम करण, और जब इस शो का ट्रेलर मैंने देखा, मेरे पास शो आ भी गया था कि आप देख लो थोड़ा। मतलब हिम्मत नहीं हो रही है अभी देखने के लिए, बिकॉज मेरे को बहुत पेशेंस, इत्मीनान चाहिए, और घर में थोड़ा शोर वोर भी होते रहता है, तो मतलब नहीं, थोड़ा आराम से बैठ के मैं देखना चाहूँगा। 1-2 दिन में मैं पक्का देखने वाला हूँ। बट सर ट्रेलर ही इतना हिला देने वाला है। डायरेक्टर सर हमारे साथ बाजू में बैठे हैं। थैंक यू सो मच सर। आपका नाम पहले कैसे प्रोनाउंस करते हैं मेरे को वो? नील माधव। नील माधव। अच्छा। नीला है ना नीला? Yeah, it's actually in Odia it's Nila Madhab. अच्छा अच्छा। So but it's easier to pronounce Nila. तो ऐसे what is the common mistake people make when they say your name? I have many names. Nila, Neel, Madhav, Maddie, Panda, everything. So when you have 3 words, no, so people can take whatever easiest is they take it. जी। आपका फरिया ऐसे कोई मिस्टेक करता है आपका नाम लेने में? हमेशा। अच्छा। फरीना, फरीदा, फरीदा? फरा, अरे बाप रे। सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो भी आप निकाल सको। अच्छा सर, आपका नासिर नसर क्या बोलते हैं? लोग क्या बोलते हैं? In Telugu they call me Najar Garu. Here they call Nasir Saab. Okay. And what my parents named is Nasser. नासर। देखो अभी आज सबका नाम हमने करेक्ट बुलवा दिया। अगर आप अब तक नहीं ले रहे थे तो आज सीख जाओ। ये मिनी ट्यूटोरियल इसलिए था। बट मैं जब ट्रेलर देख रहा था ना, मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। जब आप सारे अपने एक्टर्स को या किसी को भी पिच कर रहे थे, ये शो बता रहे थे कि आपको ये इसमें काम करना है, कितने लोग का मुंह खुला का खुला रह गया था। हाँ, ये बात तो सच है। इसलिए हम एक्टर्स में कम से कम फेल नहीं हुए। अच्छा। अब तो बाकी आप शो देखेंगे कैसा लगेगा वो अलग बात है। क्योंकि कहानी सबको इतना अच्छा लगा जी। मैं जब एक 1 पेजर कहानी बताता था, उसके बाद आगे बोला कि हाँ डन। ओके। सो फ्रॉम नासिर सर टू मकरंद बाई टू फारिया, सो मैंने एक सिंपल चीज़ किया था कि ये कहानी है, ये इसकी बैकग्राउंड है। जी जी। उसके बाद उनको मालूम है मैंने पीछे फिल्म में क्या किया है। तो कहानी एक तरीके से ऐसी थी कि किसी को सवाल खड़ा नहीं हुआ कि इसमें और क्या बोलने वाले हैं। जी। बिकॉज द प्लॉट इटसेल्फ वाज वेरी यूनिक इन द वेब वर्ल्ड पर्टिकुलरली। सिनेमा में तो बहुत कुछ होती है, वेब में अनलेस यू गो बियॉन्ड द बाउंड्री तो लोग इंटरेस्टेड नहीं है देखने में। बिकॉज टुडे ऑन योर फोन व्हेन यू थिंक ऑफ वेब सीरीज यू हैव कोरियन, जापानीज, अमेरिकन, यूरोपियन, हजारों शोज। व्हाई वुड समबडी इन्वेस्ट 5-6 hours on your show? And you have to do something. It's very challenging in that way. तो आपको लग रहा है स्क्रीन मिलने से अच्छा इधर टाइम मिलना ओटीटी में मुश्किल हो गया? बहुत मुश्किल हो गया बिकॉज दे कैन रिजेक्ट। आपकी वेब शोज का सिंपल सा फॉर्मूला है 5 से 10 मिनट। 10 मिनट में इफ यू डू नॉट होल्ड योर ऑडियंस, आई मीन आई डोंट नो हाउ पीपल आर गोइंग टू रिएक्ट फॉर आवर शो, बट आई हैव रियलाइज दैट टू माई सेल्फ एज अ क्रिएटर। आई मस्ट से कि 10 मिनट आप होल्ड नहीं कर पाए ना, उसके पास और 10 शो है जाने के लिए। ट्रू। तो यू हैव टू बी एज अ क्रिएटर, यू हैव टू बी दैट कॉन्शियस और क्रिएट दैट काइंड ऑफ अ स्ट्रॉन्ग शो फॉर देम टू फॉलो। अच्छा। बिकॉज क्यों आधा घंटा देख के फिर क्यों जाएगा? उसके लिए तो और भी ऑप्शंस है। अब एप्पल चला जाएगा, नेटफ्लिक्स, अमेजन, सोनी, जी, कहीं पे भी जा सकता है। सो ट्रू। और यूट्यूब पे बहुत सारा माल मिल जाता है। तो जैसे आपने कहा अच्छे से कि आपने टीजर देखा और मुंह खुला रह गया, हमें यही उम्मीद है कि हर मिनट शो का ऐसा हो कि ऐसे मुंह खुला रहे। बिकॉज हम जैसे एक अच्छा शो देखते हैं
और एक दिन में ख़त्म कर देते हैं। दैट इज ट्रू। तो हमें उम्मीद भी वही है That is true. कि जेंगाबुरु में ऐसा कुछ है जो आप अंदर घुसेंगे निकल नहीं पाएंगे। वंडरफुल, पकड़ के रखेंगे सर, दलदल जैसे। लेकिन जब मैंने ट्रेलर देखा तो फर्स्ट थिंग आई सर्च्ड वाज जेंगाबुरु कहाँ है। जब आप दोनों के पास आया तब आपको पहले से पता था कि यू लाइक अच्छा पहले कहाँ है ये जगह, ये तो देख लें। Yes, अच्छा, I thought it was a Hindi word. ओके I'm not good at Hindi. ओके So I call my Hindi friends. Machan, what do you mean by Jengaburu? Jengaburu? What do you mean? No, it's a Hindi word. Just find out what it is. Then after some time they say Jengaburu. There is no Hindi word. Then I asked today, Machan, Viswanathan Hindi master kar, Hindi teacher. I'll call him. Do you have his number? So he gave me. He searched and gave me Viswanathan sir's number. So I called Viswanathan sir. Viswanathan sir, இது மாதிரி ஜங்காபுருன்னு ஒரு வேர்டு சார் என்ன மீனிங் நான் டைரக்டர் கிட்ட கேட்கறதுக்கு டு ஆஸ்க் டைரக்டர் ஐ ஃபீல் வெரி பேட் पता चला बोलने मत करो what is the title of your so he may throw me out of the project Exactly. so I told Viswanathan, then he said Jengaburu, he is a great scholar. Jengaburu, there is no word. Okay. There is no word. Maybe even in Sanskrit it's not there. Oh. So then I called him and I came to know that Jengaburu is a place. Yeah. It's a place. So and when you hear that, you are very curious to know what is it about. Absolutely. So this is how I understood. Okay. How many days it took for you to call him after the first day? No, third day. Third day. Okay. 3 days, sir. अभी और मजेदार चीज हो रहा है। अच्छा। आज जैसे पीआर टीम की किसी ने आए बोला कि सर क्वेश्चन उठ सकता है, जरा ध्यान देना। मैं बोला क्या हुआ? नहीं, वो जेंगाबुरु ना हिंदी बेल्ट के लोग बोल रहे हैं कि वो तेलुगु वर्ड है। अच्छा। तेलुगु बोल रहे हैं कि मलयालम वर्ड है। Okay. ठीक है। अब ऐसा एक माहौल ये हो गया कि और कौन सी लैंग्वेज में जेंगाबुरु है किसी को पता नहीं है। अरे बाप बट आज ट्रेलर लॉन्च होगा, पता चल जाएगा। ओके ओके ओके। नहीं, सब जगह सर्च करने वाले हैं। द मोस्ट पॉपुलर थिंग ऑन इंटरनेट विल बी कि जेंगाबुरु है क्या और कहाँ है, ये सब सर्च करना। व्हाट अबाउट यू सर? का तो इंटरेस्टिंग स्टोरी तो है। जेंगाबुरु जब नरेशन दे रहे थे सर तभी बताया कि जेंगाबुरु का मतलब होता है लाल पहाड़। अच्छा। तो अब वो काफ़ी था समझने के लिए। ओके। बट सुनने में कितना सही सुंदर सा नाम है जेंगाबुरु, या सुनने में बड़ा सही लगा। एब्सोल्युटली। सर थोड़ा प्रेशर है इस जगह पर आपने जाके शूट किया, क्योंकि कभी कभी सर कंट्रोवर्सी ना बहुत हो जाती है सब जगह। जब लोग देखेंगे बोलेंगे नहीं हमारे उधर तो ऐसा नहीं होता, ये क्या दिखा रहे हैं आप, ऐसा कुछ है प्रेशर? नहीं, अब देखिए कंट्रोवर्सी के लिए इन द वर्ल्ड ऑफ रेस कंट्रोवर्सी किसी से भी हो सकता है, बट मैं वो प्रेशर लेता नहीं। ओके। ठीक है, बिकॉज जहाँ पे आप इतने बड़े मुद्दे की बात कर रहे हैं वहाँ पे आप ऑडियंस से भी एक्सपेक्ट करते हो कि वो मुद्दे में इतने फंस जाए कि उसको सवाल उठाने का समय नहीं मिले। बिकॉज आप जब फील करते हो किरदार को, आप जब फील करते हो उस मुद्दे को, कॉन्फ्लिक्ट को, सी अभी क्या है, दुनिया के 70% कॉन्फ्लिक्ट इज ऑन नेचुरल रिसोर्सेज। बात एक छोटी सी पहाड़ की कर रहे हो, कहाँ नहीं जाती है आपकी, कहाँ लंदन, नॉर्थ कोरिया, अमेरिका जाती है। जब इतना बड़ा मुद्दा है ना, किसी को और मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन खड़ा होगा, क्योंकि इट्स अ वेरी सेल्फ कॉन्शियसनेस थिंग व्हिच यू फॉलो व्हेन यू वॉच इट। सो आई थिंक इट्स सच अ इंटरेस्टिंग thriller with so much of life which I'm giving you on the normal day-to-day existence that I don't think you have breathing time to question. जगह बात ये सब हर जगह हो रहा है, जहाँ माइनिंग की बात करें, नक्सलाइट्स की बात करें, करप्शन की बात करें, पावर की बात करें, कहाँ अफ्रीका अमेरिका से लेके हर जगह हो रही है। मेरी उम्मीद ये है कि आप उसको महसूस कर लें एक बार। ओके ओके। एक डायलॉग शुरू करते हैं, फिर सवाल करते रहना। Okay, okay. For both of you, sir, I want to start with you. While doing so many interviews now, promotion चल रहा है. What is that one thing you are recalling? थोड़ा तो I'm sure recall कर रहे होगे about shoot or anything in specific when you were on the location. There are so many things.
even if you have 100 interviews, Yeah. we have 101 incidents to recollect and tell. Yeah. Because from my point of view, you know, I had done so many films, but this was not shot in a regular film kind of thing. Okay. First, nobody was a star, nobody was senior actor, nobody was new actor. I don't know, somewhere we were all together at one organism. Yeah. Right. Rarely you come across that in making film, Yeah. right? Unless the whole crew has got the same, dreams. So that itself, what I felt, throughout the thing, the energy was there without dropping. Right? I cannot forget anything, because the first day we started script reading, it started with a wonderful spiritual sound. Okay. The first time I'm okay, fine. In our acting training classes, you have to meditate, you have to concentrate on your this thing. But together, Nila Madhab started with a group, meditation Yeah. with music, closing the eyes, silence. So that sparks what kind of project is this? Sometimes you decide by how many ciphers are there in the check, that will decide what kind of movie it is. Yeah. But here, the silence, the meditations, it sparked us, what is the film about? Yeah. And what is your role in this? You know the role by reading the script, but how you are going to approach it? Yeah. That same meditative thing, it was carried till the end. Of course, in between, he got tensed. I was, get delayed by one day. It's all there, but the energy level didn't come. It went to, it was tiresome for the ADs. Yeah. I know they slogged, but they never let their energy down. It is because the subject was like that. Okay. That's what whatever we talk about climate and like Madhav used to explain again and again and again. What the legend says, legend is reality. So the legend behind Jengaburu kept us like a lot of incident. When I saw the mines, I have seen in documentaries, I have seen, but when I saw real mine, my heart, even you, right? You told me when you saw the real mine with the naked eyes, it just hurt. Then it taught me to how many kilos of iron would have gone in my car. Why not a small car? Really, we were simply sitting and talking where all it goes. Yeah. So each and every, then I met, I will tell 100 things. You won't have card we to have ample record. of time. No. Until unless they don't I stop say, it. see, it gave me so many things. Yeah. The real thing is, this project made me to understand my brother who's living in Odisha. How these tribals, we have, I don't know, maybe generally tribals we have, inclined, but here they are closer to God. They don't need to go to temple. You have to go, I have to go to Mecca, he has to go to Rome, she has to go to Varanasi. No. They are living with gods. Yeah. That's what when I interacted those tribals, they have a better understanding about the nature. So many things I learned in this process. Their art, their music, their food. So each and everything, not only me, whoever was involved in this, we all went through this trip. It is not only making this project. The indirect teaching was lot from this project. For you, आपके लिए कौन सा ऐसा जब इंटरव्यूज कर रहे हैं, आप कुछ बातें कर रही हैं, कौन सी ऐसी चीज जो थी कि आपकी नींद उड़ा दी और कौन से टाइम आप अच्छे से सोई कि आज मैंने अच्छा काम किया? जैसे सर ने बोला, मोमेंट्स तो बहुत सारे हैं, बिकॉज सीरीज़ है ही ऐसा कि आप हर रोज़ जो भी काम कर रहे हो आपके लिए यादगार रहता है, नया रहता है. मेरे ख्याल से मेरे लिए सबसे स्पेशल मेरा और मेरे कैरेक्टर का और मेरे पापा के कैरेक्टर का जो रिलेशनशिप, जो जिस तरीके से डेप्थ में हमने एक्सप्लोर किया है, वो मेरे लिए
काफ़ी स्पेशल था, क्योंकि एक तो उनके बीच में जो डिस्टेंसेस है, जो क्लोजनेस है, वो इमोशनली मुझे दिखाने में जो कंटेंटमेंट, फुलफिलमेंट मिला, वो ऐसा काइंड ऑफ कैरेक्टर मैंने पहले कभी नहीं किया। ओके। तो उसमें एक तो बहुत मज़ा आया। तो मतलब उसके जो भी अलग अलग टाइप के सीन्स थे जहाँ पे मुझे इमोशनली बहुत हेवीली इन्वॉल्व होना था। कभी कभी आई वाज मेंशनिंग बिफोर ऑल्सो के 6 to 8 to 10 hours I would be in the same zone, बस आंसू जा रहे हैं and I wanted to be like that. It's not like someone forced me to be like that, but क्योंकि I wanted to keep it authentic. I wanted to show के किस हद तक she has been affected, and for that I wanted to be affected as well. So personally आप अगर सोचेंगे so I'm just talking about the father daughter character. उसी तरीके से personally I have been affected by each element in the story. अब वो tribals हो, उड़ीसा हो, या फिर प्लॉट का जो पिक पॉइंट है वो हो, हर चीज़ को मैंने बहुत पर्सनली फील करने की कोशिश की है, एक्सपीरियंस करने की कोशिश की है। और द बेस्ट पार्ट इज, जैसे आप कभी कोई हॉरर मूवी के हिस्से सुनते होंगे कि इस मूवी के शूट के दौरान सच में कुछ हुआ था या सेट वेट जल, ऐसे कहानियाँ आप सुनते हो ना, तो इवन इफ यू आर अ नॉन बिलीवर यू माइट फील के वाओ, मतलब कुछ और एनर्जी वहाँ पे प्रेजेंट थी। मुझे ऐसा लगा कि इस शो की जो एनर्जी है, इट्स लाइक मतलब हमसे निकाला गया है ये इंसान, हम जो मिलके जिस तरीके से शो को क्रिएट किया ना, वो बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था सर। जिस तरीके से टीम ने, एडीज की टीम ने, हमारी सारी टीम ने अपना काम किया है। ऐसा नहीं है कि हम वी वुडंट लूज आवर माइंड्स, वी वुड, बट अगर सर इज लूजिंग हिज कूल, यहाँ पे 10 लोग उनको संभालने के लिए होते। इफ आई एम लूजिंग माई कूल देयर विल बी 10 पीपल टू, बट हम सब ये सबके लिए करते। वी वुड डू इट फॉर एवरीवन, वो एडी हो, साउंड वाला हो, कोई भी हो, वी वुड डू दैट फॉर एवरीवन। लाइक ही सेड ना, हम सब एक यूनिट बन चुके थे, एंड दैट हैपेंड बिकॉज ऑफ द एनर्जी ऑफ द नीड ऑफ द आवर। इट्स लाइक अ कॉलिंग दैट ऑल ऑफ अस वर पुल्ड टुवर्ड्स, इट्स स्ट्रॉन्गर देन एनी ऑफ अस। एंड ये प्रमोशन के लिए नहीं बोल रहे हम, वी आर सेइंग दिस बिकॉज वी सो स्ट्रांगली फील इट। देयर वाज अ सीन आई very clearly remember that I wanted to channel the pain of Mother Earth in that scene. So जिस तरीके से sir explained it to me कि I want you to throw this at that, it's like literally the last episode में it's the final question to not just one person but to the entire audience watching it. That I think for me is the favorite scene for me till now. But that came from the space of me trying to channel, agar Mother Earth was a character, how would she say this? And I tried to, and I was just tearing, I was almost dizzy while trying to do it. तो ऐसे ऐसे चीजें हमने क्रिएटिवली ट्राई की अलग अलग, बहुत ही डिफरेंट। तो इतना इंटेंस माहौल में सर, व्हाट इज द फन थिंग यू गाइस डू ऑन द सेट? क्योंकि हमेशा टेंशन ही रहता होगा। See, we are all serious, but we didn't lose our fun or our relaxing thing. Fun in the sense, it doesn't mean gossiping, or it doesn't mean. We talk about so many other things. She talks about music and painting. Okay. The child is too good in painting. Okay. We talk about that. Yeah, I can see the tattoo. Yeah, that she very colorful do it. No, so we have a lot of things. You see, it is, and being tense to throat thing, it tires you. Yeah, even more. We are all aware of it. Yeah. It's not like that. The whole thing is intense, but we were all relaxed. I don't know how we were relaxed, but we were relaxed. Okay. But someone might be just recording everything, selfie ले रहे, कौन ऐसा कर रहा था? We have 2 hours of footage, Nasser sir doing prank. Oh wow! That sir, I'm so sorry. 2 hours of footage of you doing pranks. Sir, you don't come across doing all this. Sir, he's a child. अच्छा. ये दिल से बच्चे हैं. ये भी probably. And we had a great, for me or for us, he was a relaxing factor. अच्छा. When he is too tensed, how nice it becomes. So animated,
it is not a real anger. It's not anger. It is about the thing. It's not happening. The best entertaining, relaxing fact. Sorry, again and again I'm telling. See, we had 3 cameramen, wonderful human beings. One is from Mexico. One is Mexican. One is Cuban, one is from Netherlands. All of them don't know English. Okay. They don't know English. They don't have their own common language. Spanish based something they are. Spanish, Now he has to explain the situation of an Indian forest, Indian tribal to them, and they have to understand. And they have, so that if you sit and watch, it is more interesting. This thing he will narrate. See, the thing is, the classic thing of this thing is him choosing 3 cameramen who doesn't have connection, who doesn't know what is the forest of India or the tribe. He brought them. I asked him, sir, if we have wonderful cameramen, if we ask so many people, you come. You know what he said? I want to see how West see our forest. You see? I want them to see our forest. And they gave the best. They gave the best. So this are Paolo, you know what? He's like a twin brother of only thing is he's the chief cameraman, and he is more naughty. So it's an intense drama, but we didn't lose our energy and fun. We all had. I think he purposely kept this for the entertainment. आपने क्या क्या सीखा उनको समझाने के लिए? आपको लैंग्वेज तो सीखना पड़ा होगा उनका वाला. मेरे that's a perennial problem I have. अच्छा. So in about 20 years back, when I was in London, I gave my first speech. It was in Westminster, and I don't come from a English background or even not a Hindi background. So the only language I knew was Odia. You know? So imagine 20 years back, अभी तो थोड़ा सुधार आ गया अंग्रेजी में, तो उस वक्त जहाँ पे एक सेंटेंस भी कंप्लीट नहीं कर पाता था, ठीक है? So what sir has been saying, the answer to that is this. तो मैंने पहला स्पीच दिया with those British parliamentarians, artists, and from all over the world. So whatever I gave the speech, I came out and they were clapping for 5 minutes. I called one Indian fellow and I asked, क्या समझे जो clap कर रहे हैं? Because my English was like nobody would understand a single line, and they said they understood your emotion. So all we were trying to do is to give the emotion. You don't need language for that. That is what cinema is. You know? You don't need to understand the language. Cinema itself has the language. You know? But sir, if you have to imitate, because थोड़ा language में barrier होता है, what are the fun actions you used to make to the cameraman? कि ऐसे कैमरा घुमाओ, ऐसा करो, ये करो, वो करो. अभी वो टीवी होता तो बता देते सर, आप रेडियो बोल रहे हो तो नहीं. नहीं, ये तो हमारा डिजिटल भी जाएगा ना सर. I cannot. हमारा डिजिटल भी है सर. रेडियो सिटी इंडिया इज आवर डिजिटल. जब मैं टॉयलेट जाता हूँ अभी करेंगे. मैं करूँ. हाँ, एक हो जाए. Paolo, I quite like it. That thing, you know, that Paolo is that. No, I don't want that. You go in. You go. हाँ, समझ रहे हो तुम? I think if I direct a film, I'll cast him. Yeah, I think इतना intense हो गया सर. Behind the scene release कीजिए. It is too much fun. ये वाला. Yeah, let's tell the The team. greatness of Nila Madhab is, I have been watching the way he talks to cameramen is entirely different when he talks to artists. That thing, you know, that thing. See, that is very intimate. The cameraman, he wants to order them, make them understand. When he talks totally. that, it is like, you know, teacher plus father plus uncle. No, like that. So it becomes easy for us. And he might be screaming on this side, okay? Like चिल्ला रहे. फिर पलट के बोले हाँ. तो हमारा दिमाग एकदम ब्लो हो जाता था कभी-कभी. चिल्ला रहे यहाँ पे और फिर पलट के
हाँ तो मैं बोल रहा था I think to Sir's defense, I'll say this is the secret recipe to make an intense drama drama show. But जाते थे two last thing, I want to know the reason of your tattoo first. ये क्या tattoo है? So these are roots and that's the ocean and the moon. But ये मेरे लिए important इसलिए है because I very strongly believe कि आप जितना अपने roots से connected होते हो आप उतना ऊपर जा सकते हो. Okay. एंड आई ऑल्सो थिंक दैट आपके रूट्स आपकी यूएसपी है सो उससे कनेक्टेड रहना इज ऑलवेज गोइंग टू कीप यू क्लोज टू बीइंग योरसेल्फ एंड बीइंग योर इंडिविजुअल कोर. Wow. I love the tattoo stories. That's why I ask. It's amazing. It's a funny thing. The tattoo story is the first time we met. नरेशन के बिगनिंग में सर इज जस्ट टेलिंग मी तो ये प्रिया दास है, ये ऐसी है, बचपन में उसको एक टैटू था बोंद्रिया टैटू जिसमें यू नो एक ऐसे रूट्स उसमें पैर पे होंगे ऐसे. मैंने बोला सर ऐसे, तो बोलते मिल गया हमें बाउंड्रिया. तो मैंने बोला really बस surprising. This was destiny. Yeah, This was that's what. Sir, and it's my destiny. I'm meeting you. I remember as a child, I first saw you in Chachi 420. Okay. And since then, I've been like, so मैं बचपन से सर मेरे को बहुत लोग पूछते हैं, what have you done? So I've always said my 4 best friends when I was growing up was Setmax, Z Cinema, Star Gold, and Before You movies on TV. Because I've been watching movies day in day out, and I've seen so many movies of yours. And I want to ask you this question before I end this interview. I don't know how many films you have done. I don't want to search on Google as well. I'm sure the number is more than 500,000-700,000. What is the number? Yes, I don't have the exact number, but I have crossed 650, nearing 700. But that's only numbers. Yeah. You know, when you want to collect the moments, it's very few. Yeah. So, but thanks to my teachers. Yeah. So the question is, sir, what do you look for now? What is that one thing which is remaining inside your brain, heart, mind? Still, it has to come out that you are keep on doing some projects somewhere or the other. Language doesn't matter. I don't You're have still brain, but I think I have a heart. what does your soul want? No, Chali, what let me I put it across say- like this. No, it has got so many dreams. The dreams have started only now, Okay. not from childhood. Because as you grow, the dreams changes. So when I came fresh in the industry, I have to act this role, that role, that role. Then later I realized it is not you do that role, this role. Whatever role given to you, you do the best. Then I stopped dreaming. Literally, I have to do that. I stop. Whatever given, I try to do the best. Okay. And there are a lot of, other than films, there are a lot of things happening in my this thing. It's not only really a person's personality cannot be defined by his profession. It's my profession, but other than that, I have a lot of. Okay. Have you not got tired like a single day? Actually, no. No, I haven't. Physically, I have got. I may get tired when there is a long night shooting. Particularly when I do Hindi films, I have a very big thing. There in South, we have a royal timing 9 to 6. Yeah. But here 12 to 12. But now I got adjusted. Okay. But physically I get tired. But mentally I don't get. Okay. If I feel that somewhere, I have to quit. Okay. I have to quit. Okay. Wonderful, sir. Yeah. But if some wrong thing is happening in our system, then I get tired. Okay. You know, Okay. I don't know to discuss on that. So that I think, but doing a film, I don't get tired. Wonderful. And I hope you never get tired, sir. We want to see more of you. I don't know or milestone kitna record. I don't know if someone has touched 1,000 the films and people all. have done. We have a great artist called Manorama Achi. Okay. She's the greatest artist. She was a comedian. She has done 1,500 films. Wow. Not like me, a small role. All main characters she has done. So numbers doesn't mean. Wonderful. I think it's going to be awesome. जैसे हमने बात किया कि ये शो तो हम लोग देखेंगे, लेकिन I am more excited to see the behind the scenes now because इतना intense शो देखने का मेरे को थोड़ा calm down होना पड़ेगा. तो सर प्लीज निकालिएगा behind the scenes. Thank you. Definitely. Thank you. Radio City.